नमस्कार, वेलकम टू साई मंचु क्लासेस। जदि ऑडियो और वीडियो सबकिछि ओके अछि त लिखि दियो यस। ऑल क्लियर? जय जगन्नाथ पिला माने। ओके ओके तेरे आज मॉक टेस्ट नंबर 21 को समस्त को स्वागत। पिला माने आमे आज ए सेशन रे आरंभ करे जाउछंती पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स रो आज क्वेश्चंस रहइबो। तो समस्ते टिके विलंब न करिकी फटाफट सांग मान सहित गोटे गोटे शेयर कर दियो रे। डिसेंबर 17 परीक्षा, ओके डिसेंबर मास परीक्षा। तेबे परीक्षा पाई आमे केते सचेतनता अछंती, आमे हमर प्रिपरेशन केमति चलीची ताहार आमे आज इवैल्यूएशन करिबा। यस सीटू नमस्कार। ओके तेबे एटी रही वर्तमान आज सेशन इंडियन मोर पॉलिटिक्स इंडियन 1 सेकेंड पिला माने हाँ What are the maximum number of seats fixed for राज्य सभा in India? इंडियन पॉलिटी आज जो क्वेश्चंस रही तो प्रथम क्वेश्चन समस्त जे एटी प्रश्न रही कि राज्य सभार सभ्य संख्या केते 245, 252, 260, 250। तो कौन हम सठिक आंसर? बहुत बढ़िया। ये कौन हम आंसर रे? डी हम आंसर 250 सीट्स होची हमर कौन रे फिक्स्ड सीट्स माने राज्य सभा रे 250 जन हमर मेंबर रही परिबे। अच्छा तबे एटी मु कहबे चाहिबी देखो कि हम टोटल सीट फिक्स केते अछि रे ना 250 टा सीट फिक्स अछि। ठीक अछि तांको मध्यरु 238 होची इलेक्टेड माने कोन से निर्वाचित होई आसन केते रे सर राज्यसभा को निर्वाचित होती 238 जन एवं 12 कौन ना 12 होती नॉमिनेटेड माने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड करिवे और 12 जन कोतरे ना आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, ओके तो स्पोर्ट्स ए क्षेत्र रे राष्ट्रपति कौन करे ना 12 जन करो माने नॉमिनेट करिवे जे किए हेबो एमान मध्यरु राज्यसभा रो एमपी। ठीक अछि ते हम जानले कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जानले, इलेक्टेड मेंबर जानले 238 एंड 12 जंदी हम कोन रे पिला माने नॉमिनेट होची माने 12 होची नॉमिनेट हमर अछंती ता तो माने देखो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस एक्सेट्रा। तो करेंट स्ट्रेंथ केते हमर अछंती 245 मेंबर्स अछंती रे
includes 233 elected and 12 होचंती nominated तेबे एटी हमकु बेले बेले प्रश्न आसे सर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन रे पार्थक्य कोन रहिछि ओके आमे कहि परिबा कि जे राज्यसभा रो जेमती लोकसभा रो जे माने हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा नाम होचंती किए ना चेयरमैन बा स्पीकर तेबे ठीक सेमती राज्यसभा रे जे अध्यक्षता करंती से किए से वाइस प्रेसिडेंट ठीक अछि तेबे एट तक रहिछि किछि डिफरेंस रहिछि चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन तेउट सब प्लान पढि नेबे ठीक अछि so he is not a member of the house deputy चेयरमैन he serves as a member of the house okay okay नमस्कार बैच स्टेशन प्रीति 𝐃𝐨𝐬'𝐿 okay who among the following decides whether a particular bill is a money bill की डिसाइड करंदी गोटे बिल टा मनी बिल की नुह की करन डिसाइड गोटे बिल मनी बिल की नुहे बोली किए करबे डिसाइड रे सब प्रेसिडेंट नहीं तो किए करिवो वेरी गुड ओके सो मैं कहि परबा एठी सब प्राइम मिनिस्टर भी नुहे स्पीकर ऑफ द लोकसभा सी डिसाइड करिवे वेदर इट्स ए पर्टिकुलर मनी बिल माने एनी बिल और मनी बिल सो our according to our माने 110+3 of the Indian constitution कौन कहूची रे एटी कहूची कि Indian if any questions arise as whether a bill is a money bill or not a decision of the speaker of the Lok Sabha is final by लोकसभा स्पीकर फाइनल करिवे कि वेदर इट इज ए मनी बिल और ए नॉर्मल बिल ठीक है यस बिल और मनी बिल ठीक अछि सो एटी बर्तन जानिबा हम केते प्रकार पिला ने बिल रहिछि रे केते प्रकार बिल रहिछि से ऑर्डिनरी बिल अछि मनी बिल अछि फाइनेंशियल बिल अछि एंड constitutional amendment bill रहिछि so ordinary bill कौन कहूछि the most common type dealing with any subject matter outside of the financial ones financial को छाड़ी की जहां रहिला बाकी होछि को हमर ordinary bill simply majority ले कोन बोथ हाउस एटा पास हे जिवो ordinary bill so money bill कौन so specifically deals with the financial matters by financial matters the deal करूची and like taxations and public expenditures as defined in article 110 of the constitutions by संविधान रो जे धारा 110 रे डिफाइन कराइची ओके सो एक्सपेंडिचर अबाउट मनी बिल्स सो फाइनेंस बिल्स हम जानि जंदी okay distinct from money expenditure but distinct from money bills and they are classified into category A and B equal approval from the house and the president assents by financial bill na approval darkar okay apanଙ୍କର parliament approval means both house means कोन कहूची ना एटी कहूची कि लोकसभा and राज्यसभा both house रो एटी से माने अप्रूवल दरकार होची एंड देन इट्स constitutional amendment bill so it is a बहुत important bill can anyone write in the comment box what is the article धारा कोन ए जो हमर रहला सी ए constitutional amendment bill रा आर्टिकल कोन देखिबा कि आंसर देबे so it's majority okay majority in the मान जति हमर लेजिस्लेटिव व्यवस्था भी करे मेजॉरिटी रहइबो त कोन होपरे सो हमर अमेंडमेंट हे परिबो
Which of the following article define the money bill? एबे मु कहि आसिली ओके एबे मु जस्ट कहली रे सो मोर प्रश्न थिला कोन गोटे ना हमर केउ धारा यस बहुत बढ़िया प्रीति नायक देले सठिक आंसर आर्टिकल 368 and that's creation very good deals with constitutional amendment bill okay अरे वाह very good Vyas and it is borrowed from South Africa constitutions कोटारे आमर संविधान संशोधन प्रणाली so which of the following article define the money bill so money bill एबे जस्ट कहले मु धारा 110 रे about लिखाइ छै about money bill ठीक अछि which of the following article deals with annual financial statement a annual financial statement or budget तो ये कौन आंसर okay प्रीति so कौन होगा आंसर रे हो पिला तो नहांती व्यस्त कहीं होउछ रे हो ठीक अछि ताले हो करिया सो द आंसर इज कौन आंसर रे अब हम डी हबरे बजेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजेट होची कौन बा हमर धारा 112 बहुत बढ़िया सो अबाउट बजेट सेशंस ओके हमर मानसून सेशन रहिची विंटर सेशन रहिची एंड स्पेशल सेशन रहिची ड्यूरेशन कौन रे हम टिपिकली फेब्रुआरी रु मे गोटे सेशन होची ओके सो देन यूनियन बजेट इन स्ट्रक्चर कौन ओके अब बेसिकली जानो एति कि हमर मानसून बजेट ड्यूरेशन होची जुलाई टू सितंबर ओके and deals with legislative business such as passing pending bills and decision and new approvals so about winter को जानि बारे winter session रोची नवंबर रो डिसेंबर एबे हमर आरंभ होई जिवो पार्लियामेंट रे तबे ऑलरेडी आरंभ होई गलानी ठीक अछि एंड एड्रेस urgent legislation and discussion policy issues often including reviews government performance ठीक अछि so types of bill ठीक अछि yes ordinary bill money bill financial bill and special bill financial bill data हमर गोटे होची financial bill 1 clause 1 clause 2 so this is special bills माने कोन रे या माने होची कि constitutional amendment bill जहा कि article 368 so which of the following article talks about the contingency fund of India contingency fund of India को धारा कहूची कोन आंसर अरे contingency fund of India कोटा कहूची से आर्टिकल 276 अरे 66 ने रे 66 हबो नहीं रे 267 हबो ठीक अछि देखो सो डिफरेंट हम दुटा फंड अछि गोटे अछि कंटिजेंसी फंड और अछि कंसोलिडेटेड फंड सो बेसिकली हम जानिबा कि हमर जो रहिला पिला माने कंसोलिडेटेड फंड माने कोन रे या पर्पस इज फॉर ऑल रेगुलर गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स कोन दिस इज कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी कोन टू मीट अर्जेंट ओके अनफोर्सीन और इमरजेंसी एक्सपेंडिचर आज भाई बन्या बात्या के आसी गला सुनामी आसी गला बा कोरोना आसी गला तो तापे कोन कंटिजेंसी फंड को हमें व्यवहार करि परिबा हां बट कंटिजेंसी फंड कैन बी accessed by president and executive without prior approval भाई कंटिजेंसी फंड को हमें कौन प्रेसिडेंट बा हमर एग्जीक्यूटिव यूनियन रा अप्रूवल द्वारा ही उठे परिबा बट रिक्वायर प्रायर पार्लियामेंट अप्रूवल बट कंसोलिडेटेड फंड कोन रे बिना पार्लियामेंट अप्रूवल उठे परिबा
नहीं। सोर्स ऑफ फंड्स ऑल रेवेन्यू लोन्स रिकवर्स लोन रिसीव्ड एटी फंड आसे केमति रे जो हम जो रहला कोन पिला माने कहली मो कि कंसोलिडेटेड फंड को पैसा आसे कोठू आमे जो सब लोन्स नियंती ओके हम जो लोन सुझंती सब सेट की जाए ओके बट एटी कोन गोटे फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है ए फंड को जे जरूरी समय में एती फंड हम उठेई पारिबा। यस मान्यवर गुड इवनिंग ओके सो लाइक एथु कोन मिला हमको एथु मिला सैलरीज पेंशन्स डिफेंस सब्सिडीज एंड अदर रूटीन एक्सपेंसेस बट एथि कोन आसे रे ना कंटिजेंसी फंड रे हमरो जदि बन्या बात्या ने प्राकृतिक किसी दुर्विपाक हबो त हम एथु पैसा उठेई पारिबा। Okay, 0 hour is the contribution of which country to the parliament system? कौन आंसर 0 hour एटी प्लान प्रश्न रही कि 0 hour आमर जो कंट्रीब्यूशन है को आमे आम पार्लियामेंट रो कोटा मानि छंती ताको हाँ ट्रिकी क्वेश्चन है कि नहीं अरे 0 hour इंडिया ठीक अच्छे इंडिया सर केमती इंडिया देखो सर 0 hour इज एन इनोवेशन of the Indian parliamentary system. It is a time when members of the parliament can raise urgent matters of the public importance without prior notice. Concept that originated in the Indian parliament in 1962. 1962 टा आरंभ हेछि ठीक अछि origin तो कहली function तो जानि लो ठीक अछि गवर्नमेंट एंड द नेशंस अटेंशन ओके तो टाइमिंग कौन यार typically after questions hours before regular business of the day begins okay period from noon 1 p.m. begins historical report at 0 hours basic question is some basic questions हुए who among the following is authorized to preside over the joint session of the parliament आंसर दियो गोटे सेकंड पिला माने कौन रे सर पीडीएफ दियंतु पीडीएफ नियो क्या मना कला पीडीएफ नियो हाँ दबा हो ठीक अछि पीडीएफ दबा ओके सेशन सरी गला परे मु शेयर कर दे टेलीग्राम रे ओके सो हु among the following is authorized to preside over the joint session of the parliament joint session parliament जेतल हुए तो किए करंती प्रेजाइड सर स्पीकर ऑफ द लोकसभा ओनली ओके कौन कहली मु स्पीकर ऑफ द लोकसभा ठीक अछि who has the right to issue money from the consolidated fund of India what answer sir एटी कहाँ पर अधिकार अछि रे इशू मनी फ्रॉम एबे जस्ट कहली कि कंसोलिडेटेड फंड रो टंका उठिए बोले कहाँ दरकार भाई माने परमिशन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट बट जे कंटिजेंसी रो पैसा उठौ चंदी तले कौन करना प्रेसिडेंट करो अप्रूवल दरकार ठीक अछि which of the following committee examine the annual audit report of the
Comptroller and Auditor General of India, CAG. हाँ आंसर दिया रे कौन है आंसर सर एटी प्रश्न रही कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी को कमिटी एग्जामिन करे एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सो द आंसर इज सब पब्लिक अकाउंट्स कमिटी रे जो सीए जे कौन ना ऑडिट करंती महासमीक्षक ओके कैग ऑडिट करंती ठीक अछि सो देखो आमर विभिन्न पार्लियामेंट्री कमिटी अच्छी रे गोटे हूँ फाइनेंशियल कमिटीज गोटे हूँ आम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी अदर कमिटीज एंड एडहॉक कमिटीज सो ये आपंकर फाइनेंशियल कमिटी अंडर रे आसले कौन रे आम आइला हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ओके आमर एस्टिमेटेड कमिटी एंड आइला कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग जस्ट जहाँ कहूली ठीक अच्छे सो अदर कमिटी ऑफ कौन सुना प्रिविलेज एथिक्स एंड कमिटीज द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द डैश कौन आंसर ठीक अच्छे देखो द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द रूल्स कमिटी यस दैट्स इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे देख भाई एठी स्पीकर हेले स्पीकर ठीक अच्छे तो ये कह कि मनी बिल को भाई बाय द स्पीकर सो ये आपंकर देख डिस्क्वालिफिकेशन ओके सो नाउ हम बर्तमान पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हु और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस भाई भारतीय संविधान रो ये पचार कस्टोडियन किए कौन आंसर देख ये पिला माने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन कि रे ना जुडिशियल सिस्टम हेड आमर कौन अच्छी रे ना गोटे अच्छी लेजिस्लेटिव गोटे अच्छी एग्जीक्यूटिव गोटे अच्छी जुडिशियरी ठीक अच्छे सो जुडिशियरी कौन करे ना जदि एंक भितर किसी कन्फ्लिक्ट देखा जाए तो कौन कर जुडिशियरी हूँ हस्तक्षेप कर तो कस्टोडियन किए है नाम हूँ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राइट सो इवोल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आमर कहीपर कि प्रथम आम आसला रेगुलेटिंग एक्ट आसाला इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट आसला Supreme Court of India was inaugurated in dash year केबे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केबे इनागुरेट होइतला रे
कौन भी आंसर सर 1950 जो समय हम कहला रे कौन 1974 एटी अछि इनागुरेटेड अछि रे बाबा सो जो समय हम कहला रे हम संविधान हटला प्रणायन होइतला ठीक अछि at present how many judges are there in supreme court हम सुप्रीम कोर्ट रे एबे केते जण अछंती जजेस how many judges are there in the supreme court so on your answer सर 34 ठीक अच्छी 34 देखो 34 केम दिला सर 30 हाँ 34 जजेस and 33 judges plus 1 CJI ठीक अच्छी सो जॉन आमे कह 33 plus 1 CJI माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो मिसी 34 हेले ठीक अछि आ ये बट ये के पिला माने हमर अछंती नूतन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखो एखन ना कोन रे ना जस्टिस सूर्यकांत ओके सूर्यकांत आ हमर वर्तमान डिसेंबर आ तो 2 हेला आज पर्यंत अछंती ठीक अछि रिसेंटली से कम हेला पिला माने हमर नवंबर 24 ठीक अछि नवंबर 24 रु से हमर कहले रे ना नुआ सीजेआई हेले आ हमर 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओके सो बुझिले कि नहीं अच्छा सीजीआई को के दिन अपॉइंटमेंट सर सीजीआई को दियंती हमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट दियंती क्लियर The resignation letter by a judge of Supreme Court is addressed to एटी प्रश्न रही कि the resignation of a letter by a judge to Supreme Court is addressed जदि सुप्रीम कोर्ट रो सीजीआई बट माने कोन जज ठीक अछि से कोन करिबे ना होची हमरो ताको रेजिग्नेशन देबे से काहा को दियंदी ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन करिवे से निजर कौन करन पिला मन से ना निजर इष्टा पत्र दियंती काहा को मन जते हम जज कौन करिवे रे जज माने काहू देबे ना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देबे निजर रेजिग्नेशन the power to increase the number of judges in the Supreme Court of India vested in पे का हाथ रही रे पावर सुप्रीम कोर्ट रो जज मानक संख्या बढ़ेबा को का हाथ रही पावर यस आरती प्रणाम प्रणाम जय जगन्नाथ सो कोन आंसर सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति संख्या बढ़ेबा को हेले मैं कार रही का हाथ रे पावर रही रे सर द पार्लियामेंट ठीक अछि पार्लियामेंट चाहिले कहबो नंबर संख्या बढ़ी पारिबो salaries of the judges of the Supreme Court are determined by salary जज मान को सुप्रीम कोर्ट रे मिलुवा सैलरी को किए स्थिर करंती के पे कमिशंस लॉ कमिशंस ना पार्लियामेंट ना काउंसिल मिनिस्टर्स अगेन पार्लियामेंट हमें जस्ट पढ़ी ना पिला माने कि पार्लियामेंट कौन करे हाथ रे पावर रही से सैलरीज को ही डिस्ट्रीब्यूट करता कहार ना जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट which of the following
dispute not come under the original jurisdiction of the Supreme Court? कौन आंसर? हाँ कौन आंसर रे? देख ये आम कहीपर कि पे ए हम आंसर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ये अच्छी डिस्प्यूट नॉट which following dispute not come under the original jurisdiction ये आपको आसूची कौन रे ओरिजिनल आसूची ये मध्य आसूची ओरिजिनल रे ये मध्य आसूची ओरिजिनल रे आसु नाही कोटा ए आसु नाही doctrine of judicial review originated from which country? Doctrine of judicial review originated from which country? Sir, the USA. Okay. देखो मोर ओरिजिनल jurisdiction रहिला then advisory jurisdiction रहिला मोर then law declared by the Supreme Court then as a court of record then highest court of appeal then ଆମର ରହିଲା ଯେ rate jurisdiction. Okay, so आमे वर्तमान स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़िबा तो स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़िबा आगुरु आमे किछि क्वेश्चन प्लान करिबा हमर को कहा पर ना ज्योग्राफी विच क्वेश्चन करिबा. अच्छा एबे फास्ट हिस्ट्री पढ़िता परे पढ़िया ज्योग्राफी ठीक अछि. Okay. The remains of the Vijayanagar Empire can be found in dash. कौन है आंसर? कौन बोले? सही है आंसर हम्पी. अच्छा whose regime is called the golden age of Telugu literature? कौन आंसर? बी है आंसर कृष्णा देवा राय. Harihara and Bukkarai have founded the Vijayanagara Empire. They belong to which clan? कौन आंसर? सभी हो आंसर संगम. The Vijayanagara king who conquered the Vijayanagar king who conquered the Singhal in 1442. कहाँ पर आंसर? डी है आंसर देवराय टू. Persian ambassador Abdul Razak and Italian trader Nicola di Conti had come to the court of Dash. Our answer
Sir D. Who built the Khajuraho temples? खजुराहो टेम्पल को किए निर्माण करथिले? राजपूत। ठीक अछि, चंदेला राजपूत। In which year did Muhammad bin Qasim conquer Sindh? को ईयर है? 712 AD. How many times did Sultan Muhammad of Ghazni invade India? How many times Muhammad Ghazni invaded India? Sir, 17 times. 17 थर ओके आक्रमण करथिले के रे मोहम्मद गजनी। The Battle of Tarin was fought between Muhammad Ghori and come answer. A answer. पृथ्वीराज चौहान। Okay, Prithviraj Chauhan was the brave Rajput ruler of the Chauhan dynasty who ruled over Ajmer and Delhi. Okay. Tahqiq-e-Hind was written by Tahqiq-e-Hind रचयिता किए रे? वेरी गुड पीके। सो ए होचे आंसर अलवेरणी। When did इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी invaded Bengal? बारह 2 AD। देखो ये दिल्ली सुल्तान Lodi dynasty, sorry, slave, then Khilji, Tughlaq, Said and Lodi. Founder of the Delhi Sultanate. Delhi Sultanate founder किए थे? कौन आंसर? सर बी हवा आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। Who was the first real king of Sultanate? Sultan। क्या ना आंसर? सर इल्तुतमिश, फर्स्ट रियल किंग। ओके। Who caused to build Qutub Minar in Delhi? कुतुब मीनार दिल्ली जो बना हला किए बने रे? से कुतुबुद्दीन ऐबक। Who introduced एकता सिस्टम? एकता सिस्टम को किए इंट्रोड्यूस करथिले? से इल्तुतमिश। यस। Razia Sultan, the first woman to sit on the throne of Delhi, and was the daughter of Sultan. कहाँ जीत लग रही? Sashi answer
इल्तुतमिश. Who of the Delhi sultans, okay, proposed the policy of blood and iron? এটা পিଲାମାନେ ଆଜି ହୋମୱାର୍କ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନରେ ପଢ଼ିବା. ଏଟା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ପରେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଲେଖିବେ. आंसर लिखिए और निज नाम मत लिखिए. ओके सो आज ये देखा आउ गोटे सेशन पे. जय जगन्नाथ.